Yes, hello Abhishek, welcome on YourPedia platform and let's start your heat transfer snap for your final HPCL interview. Yes, sir. So Amit, can you tell me something about Fourier law of heat conduction? Just tell me the Yes, sir. assumptions for writing the equation which we get through Fourier law of heat conduction. Sir, Fourier law of heat conduction, sir. Thermal conductivity is means constant, not varies with temperature. Mhm. Yes, sir. And basically, sir, the heat transfer is directly proportional to the surface area which cut the heat and thermal gradient with space. नहीं ये तो स्टेटमेंट है उसका लो का Fourier law का. Yes, Heat yes, sir. transfer is directly proportional to temperature gradient and it is directly proportional to the area lying perpendicular to direction of heat transfer. मैंने आपसे assumption पूछा है अभिषेक फर्स्ट. मेरे को assumption बताओ. एक आपने बताया चलो ठीक है. Conductivity we assume is constant. ठीक है. Sir, steady process. Steady process good. Yes. So I Mhm. can recall only this much, sir. Okay. Actually, in writing that during writing that equation, we write some negative sign. Q equal to minus Ka dt by dx. Yes, sir. Why that negative sign? What that is representing So, in the Fourier law? so basically, the temperature is decreasing if we are going in X direction. So I am telling about only one direction, that is X. If you are going from X, that initial temperature is higher, and if you are going, the temperature is decreasing. So temperature change is T2 minus T1, that is negative. So that's why it will indicating that the temperature is decreasing. अच्छा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है? Overall heat transfer coefficient, sir. Basically, overall heat transfer coefficient uses to find the means it is used in heat exchanger, sir. It is used to find the heat transfer. We use the LMTD there, UA surface Can you area. That define this? What is the definition of this overall heat transfer coefficient? It is required to be higher or lower, getting more heat transfer. sir required higher, sir. हाँ तो क्या होता है ये? How it is linked with the resistance? Sir, basically it is inversely proportional to resistance. Hmm. Yes, a lower resistance, higher heat transfer coefficient, higher overall heat transfer coefficient, sir. Mhm. What is critical radius of insulation, Abhishek? Sir, basically critical radius of insulation is that it will says that up to that radius, the heat transfer will increase. And after that, if you are increasing the radius after the critical radius, it will decreases. ऐसा क्यों होता है? Sir, because sir, conductive heat transfer is dominated up to that critical radius, and after that, conductive heat transfer means conductive heat resistance is dominate. That's why. Mhm. Okay. Can you give me some application of this concept, critical radius of insulation? Yes, sir. Basically, it is used in wire because due to the when the current is following, the heat will generated, and we have to dissipate the heat more quickly. So that's why we use the critical radius concept there. And after that, we are also using basically if any hot fluid is flowing in pipe. So basically, we use that concept critical radius there. विषय थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है? So thermal diffusivity, sir, tells about that how quickly any substance responses to thermal changes. Mm-hmm. Yes, So, sir. can you compare the thermal diffusivity of a liquid and gas, maybe water and air? Yes, sir. Thermal diffusivity of air is higher than the water.
it will. What do you mean by that? What do you mean by that? The thermal diffusivity of air is more than water. Sir, it will rapidly heat up. If you are following the air in hot object, it will rapidly heat up compared to water. Okay, what do you understand by efficiency of fins? What are fins? For what purpose we use them, and how we can define efficiency of fins? Sir, efficiency of fin is that the actual heat transfer by fin divided by maximum heat transfer of fin. So basically, we used to compare that our fin is how efficient. So, what kind of fins are more efficient, Abhishek? There are different type of shapes of fins we can get. What kind of fins are more efficient, and why? Sir, parabolic and triangular shape fins are more efficient compared to the rectangular fin. Parabolic fins are more efficient. Mhm. Abhishek, for fins we consider different cases. Like one case is tip insulated. So can you give Yes, me sir. the boundary condition for that case? Boundary, sir, at initial t equal to means initial x equal to 0, t is the which is our base temperature, and at tip del t by set temperature not change with time. Abhishek, what is Nusselt number? Nusselt number. Sir, Nusselt number is a convective heat transfer ratio of convective heat transfer by conductive heat transfer. हम्म. Yes, sir. तो क्या सिग्निफिकेंस है नस्ल नंबर का इन हीट ट्रांसफर? So basically, we use Nusselt number to find the heat transfer coefficient of any fluid. अभिषेक, एंट्रेंस लेंथ क्या होता है? Sir, entrance length basically it is used in the internal flow, and it says that up to the entrance length, the fluid is in developing phase. After that, fully develops, sir, after the entrance length. क्या होता है? How you can define a fully developed flow? So basically, the profile is not changing after the fully developed flow. Which profile? Temperature profile. Velocity Temperature profile? profile. Sir, temperature profile and velocity profile also both. अच्छा, रेडिएशन शील्ड्स क्या होती हैं अभिषेक? एंड व्हाट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ए रेडिएशन शील्ड ऑफर्स इन द रेडिएशन नेटवर्क? So radiation shields are used to increase the resistance so that the damage will not occur by the heat radiation. And so basically we use in day-to-day life radiation shield material is the aluminum. तो आप रेडिएशन शील्ड का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ वी कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेडिएशन शील्ड? So we can increase the emissivity by the painting. एमिसिविटी बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या एमिसिविटी घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा? Sir, by decreasing, sir. बाय डिक्रीजिंग एमिसिविटी. Yes, sir. तो पॉलिशिंग से एमिसिविटी डिक्रीज करता है या पॉलिशिंग से एमिसिविटी बढ़ता है? Rough surfaces are having more emissivity. Maybe suppose rough aluminum sheet or the highly polished aluminum sheet will have more emissivity. Sir, rough surface, I think. Sir. Rough surface will have more emissivity. Yes, sir. Shape factor आपने सुना होगा अभिषेक. Yes, sir. Can you explain what is that shape factor? Yes, sir. Shape factor is generally used in radiation, sir, to describe that if any body emits the radiation, how much radiation fall on second body.
अच्छा, प्लैंक्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन क्या होता है? Sorry, sir, I'm unable to recall. What is NTU of a heat exchanger, Abhishek? So basically, NTU is used in the heat exchanger that used for measure the effectiveness, the temperature of inlet. Means if the temperature is not given, it will be complex to find the heat So transfer. for So just getting the basically, more effectiveness, NTU is required to be higher or lower? sir, basically after if NTU is increased after the 5, sir, it will be not okay, not go. It will be not going to any effect of heat exchanger, sir. NTU का effectiveness पे कोई effect नहीं है. No, sir, after 5, when the NTU, the value of NTU is greater than 5, there is no significance on heat exchanger. Sir, if NTU increase, sir, effectiveness will increase, I think, sir. Okay. मेरा लास्ट क्वेश्चन अभिषेक आपसे, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ ए थर्मोकपल? Sir, time constant is that the uh, instantaneous temperature difference is 63% of the initial temperature difference. That describes the one time constant. चलो अभिषेक, मैं भी आपको फीडबैक दे देता हूँ. Yes, sir. देखो, थर्मल क्रिटिकल रेडियस आपने ठीक बताया. एक्चुअली मैं आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो. आप एक्सप्लेनेशन पार्ट को मिस कर रहे हो. आपने पढ़ा है सब्जेक्ट को, Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग है, बट यू आर लैकिंग इन एक्सप्लेनिंग ए पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर. आप क्रिटिकल Yes, रेडियस को क्या बताओगे? सर एक्चुअली व्हेन वी आर हैविंग ए वेरी स्मॉल थिन वायर, सर, so for a thin wire, sir, convection resistance will be much higher because the area is very small. So sir, if we start providing some kind of coating or some insulation over that thin wire, sir, the convection resistance will start decreasing and conduction resistance will start increasing, sir. So initially, by providing some insulation, we will observe the decrease in convection resistance will be much higher as compared to the increase in increase in conduction resistance. So sir, initially the total resistance is going to decrease, and that's why the heat transfer will start increasing. Okay, but it will increase to a significant sufficient value, and then it will start decreasing. Okay, just give me a second, Abhishek. ठीक है अभिषेक, इज इट क्लियर? yes, sir. आपने जो आंसर किया ना, उससे मेरे को ये तो पता चल गया कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है. यू आर हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, बट बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. सेम विद थर्मल डिफ्यूजिविटी, आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है. यह हमें बताता है कि हाउ फास्टली द टेम्परेचर पेनिट्रेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन ए पर्टिकुलर फ्लूइड. एयर जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. अगर आपने एयर को, हवा को किसी हॉट सरफेस के ऊपर से पास किया, so it is going to acquire the surface temperature more quickly. Heat transfer एयर में ज्यादा नहीं होगा. heat transfer will be more in liquids only. बट जो सरफेस का जो टेम्परेचर को ऑक्यूपाई करना है, टेम्परेचर का जो पेनिट्रेशन है, दैट विल बी मच फास्टर इन गैसेस बिकॉज देयर थर्मल डिफ्यूजिविटी इज मच हायर. ठीक है Yes, sir. अभिषेक? Yes, sir. एनटीयू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज्यादा एनटीयू का उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, और जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा उतना इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा, बिकॉज दैट इज क्यू एक्चुअल बाय क्यू मैक्सिमम. Yes, sir. ठीक है. प्लैंक्स लॉ देखो, प्लैंक्स लॉ क्या कहता है कि द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टी. ठीक है. तो Yes, सम sir. I कर्व think वी गेट yes, sir. लैम्डा Yes. ई बी लैम्डा का, लैम्डा के साथ जो प्लॉट है ना, एक कर्व मिलता है अपने को. इनिशियली विद द इंक्रीज इन लैम्डा, ई बी लैम्डा विल इंक्रीज, इट विल रीच टू मैक्सिमम, एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ठीक है. Mm-hmm. तो टाइम कांस्टेंट आपने सही से नहीं बताया. एमिसिविटी आप शुरू में गड़बड़ कर रहे थे, बट देन फाइनली यू रिलेटेड एंड यू आंसर्ड इट. रफ सरफेसेस Yes. का एमिसिविटी ज्यादा होता है. क्रिचॉफ्स लॉ होता है, क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन. Yes, ए sir. गुड एब्जॉर्बर इज आल्सो ए गुड एमिटर ऑफ हीट. अगर रफनेस बढ़ेगा तो एब्जॉर्टिविटी बढ़ जाएगा. अगर शाइनी सरफेस है तो उसका रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाएगा, एब्जॉर्टिविटी घट जाएगा, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन एब्जॉर्टिविटी, एमिसिविटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा फॉर शाइनी सरफेसेस. Yes, sir. चलो, ये थोड़ा सा अच्छे से देख के रखा करो. जो डिवेल्प फ्लो है ना, वो हाइड्रोडायनेमिकली डिवेल्प भी होता है, थर्मली डिवेल्प भी होता है. तो दोनों को मिक्स मत करो. बताओ सर, Okay. हाइड्रोडायनेमिकली डिवेल्प का मतलब क्या होता है कि द वेलोसिटी पेनिट्रेशन इज देयर इन द एंटायर क्रॉस सेक्शन. वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी यूनिफॉर्म,
इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द एक्स डायरेक्शन। थर्मली Yes. डेवलप में टेम्परेचर प्रोफाइल यूनिफॉर्म रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. चलो खैर, बाकी ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है अभिषेक, थोड़ा सा Yes. इसमें डिलीवरी स्टाइल इंप्रूव करो, इंटरव्यूअर को कन्विंस करने की कोशिश करो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छा करो, आई थिंक दैट इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है सर। ओके अभिषेक, गुड लक, थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सर।